Hey guys, welcome to Unacademy. So this is our YouTube channel. Let's crack 11th CBSE Commerce. A quick introduction. So I'm Riti Spandana. I've done my BTech and I have 9 years plus teaching experience and I'm a faculty from Hyderabad. So what is it that you're going to get on our Unacademy learning platform? So you're going to get daily live classes. So ये daily live classes आपको घर बैठे कच्ची internet connection, it will help you in getting a good session at आपके घर बैठे. So basically with a good internet connection you can attend all live sessions, and the biggest advantage of a live session is that you can get all of your doubts clarified. So a live session will help you with doubt clarification. और subscription और Unacademy platform ही क्यों? Why not the YouTube live session? As you can see that in this the interface is a little different from our Unacademy platform. Unacademy platform में बहुत easy हो जाएगा आपको doubts clarify करवाना and also to attend the session. So that's a big difference that you have here. Live tests and quizzes. So basically live tests and quizzes conduct किए जाएंगे almost after every few sessions that we conduct, and this will help you in understanding what are your strong areas and what are your weak areas, which areas you need to work or focus on. We have structured courses, which means whatever exam you want to enroll for, उस exam का जो भी syllabus रहेगा वो absolutely सब कुछ cover करेंगे हमारे पूरे series और sessions में. Then you have unlimited access, यानी अगर आप कोई एक live session miss करते हो, you don't have to worry about missing that session. You can always attend a recorded session of the same. So unlimited access also gives you access to these recorded sessions multiple times or as many times as you want to attend them. So this is a big advantage that you're getting on our Unacademy learning app platform. You get a chance to prepare with our top educators. They have comprehensive syllabus. All you have to do is go to Google App Store or Apple App Store and download Unacademy Learning app. और ऐप डाउनलोड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको वो एग्ज़ाम जिसके लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो उस एग्ज़ाम को आपको सेलेक्ट करना है. दैट्स ऑल. सो इन दिस केस इफ इट्स 11th CBSE, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रेफर टू. ओके. We are also available on Telegram. तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा Unacademy एडुकेटर का प्रोफाइल मिलेगा. आपको Unacademy प्लेटफॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है ऐप उसका लिंक मिलेगा और ऑल्सो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा. So as you can see here, if you are let's say preparing for 11th CBSE Commerce stream, तो कॉमर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको प्राइवेट ट्यूटर को रखना पड़ेगा. अगर आप ट्यूशन्स रखने का प्लान करते हो, स्पेशली दीज डेज व्हेन स्कूल्स आर नॉट फंक्शनिंग एज वेल एज दे यूज टू अंटिल लास्ट ईयर, तो आपको प्राइवेट ट्यूशन्स के लिए जाने के लिए भी अभी इतना सेफ नहीं होगा. एंड मोर ओवर आप हर सब्जेक्ट के लिए अलग ट्यूटर को रखोगे तो आपका फ़ी भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा. बट ऑन Unacademy प्लेटफॉर्म सारे सब्जेक्ट्स पूरा सिलेबस आपके 11th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट करेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सारे सब्जेक्ट्स का with only ₹12,500 for 12 months. जैसे आप देख सकते हो 6 months और 12 months में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ़ी में. सो यू कैन चूज़ ईदर 6 months or 12 months. But 12 months is better because it's almost as as much as 6 months का. और पूरे 12 months तक आपको सारे वीडियोस का एक्सेस मिलेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा. प्लस प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन लेते हो तो लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, तो 1-on-1 जो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होगा वो भी आपको एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे भी. सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव हियर एंड एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस. एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड RITI यू कैन अवेल अ 10% डिस्काउंट. तो आपका फ़ी हो जाएगा सिर्फ 11,250 rupees. Okay, so please do not delay, enroll today. So let's continue.
So today we are doing shortcut to vocabulary, the series we are going to continue. So today we are going to do a few alphabetical letters. Now let's start with I. इसके पहले कि हम ये स्टार्ट करें, क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन. सो this session is mainly focused on discussing root words, prefixes and suffixes. So what are root words, prefixes and suffixes? So basically root words, prefix, suffix जो है वो हेल्प करते हैं हमको ईजीली वर्ड्स को याद रखने के लिए. सो ये रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो है वो इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड्स जो है वो जब दूसरे लैंग्वेजेस से बोरो किए जाते हैं, वो बोरोड जो लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उनमें कुछ भाग जो है वो दूसरे लैंग्वेज का रह जाता है, उसको हम रूट वर्ड्स या प्रीफिक्सेस बोलते हैं. सो रूट वर्ड्स और प्रीफिक्सेस जो है उनके मीनिंग्स जो है वो दूसरे लैंग्वेज के बेसिस पे रहता है, बट ये जब इंग्लिश वर्ड में इनकॉर्पोरेट करते हैं तब कहीं ना कहीं वो मीनिंग जो है वो इंग्लिश वर्ड में भी आ जाती है. तो जब आप रूट वर्ड्स सीखते हो तो एक साथ आप बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग सीख लेते हो. सो दैट्स अ बिग एडवांटेज दैट यू हैव व्हेन यू आर लर्निंग प्रीफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स. So in this session we are going to do some more root words and prefixes. If you have any doubts you can please go back to our previous sessions that we have done. और सारे सेशंस एक बार आप अटेंड कर सकते हो ये सीरीज़ के, शॉर्टकट टू वोकैबुलरी सीरीज़ के. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेटर नाउ, विच इज़ आई. इन, आई जी, आई एल, आई आर, आई एम, all these words mean no or not. So if you look at this word ignoble, it means not noble. Noble का क्या मतलब होता है? Noble का मतलब होता है superior, someone who is great, someone who is very good. Okay, so ignoble यानी not great, not superior यानी inferior, bad, worthless, not noble. So all these words become meanings of the word ignoble, not noble. Okay, illegal, नॉट लीगल. लीगल क्या होता है? कोई भी चीज़ जो लॉफुल है वो लीगल होता है. सो इलीगल इज नॉट लीगल. इलिसिट इज नॉट लीगल अगेन. इलिसिट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो क्लियर नहीं है, कोई भी चीज़ जिसका कोई रूल नहीं है. सो इलिसिट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल इज इलिसिट. देन इररेस्पॉन्सिबल, नॉट रेस्पॉन्सिबल. irresolute, not certain or flexible. So basically irresolute, if you are talking about resolutions, आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं. सो व्हाट इज़ अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन? अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज़ बेसिकली समथिंग वेयर you decide or you feel that you need to do something this year जो कि previous year से different है. So new year resolution हो सकता है read more books and watch less movies. So if I say that is my resolution, then it means that I am very sure about it, I am very firm about it, I am very stubborn, or you can say I am very firm about this particular idea. बट इरेसोल्यूट का क्या मतलब होता है कि आई एम नॉट एट ऑल फर्म अबाउट दिस आइडिया. मेरे को बिल्कुल ये नहीं पता है कि मैं करने वाली हूँ. ओके, सो इरेसोल्यूट इज नॉट सर्टेन और फ्लेक्सिबल. एनी डाउट्स इन दिस? Okay, let's continue. Imbalance. So what is imbalance? Having no balance at all. Okay, immature, not matured. Matured is somebody who is reasonable, a person who can think clearly, a person who is aware of what is going on, is a matured person, a person who knows what is right, what is wrong, etc. But an immature person is a person who does not have any maturity, a person who does not know what is right, what is wrong, and a person who cannot do anything is an immature person. Okay, improbable, a person who is anything which is not probable. Probable का क्या मतलब होता है? Probable का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो possible हो, कोई भी चीज़ जो हो सकता है. So उस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसको
probable बोलता है. So improbable is not probable, यानी ऐसी कोई चीज़ जो हो ही नहीं सकती है. Okay, ignominious is shameful. Ignominious is a person who is a disgrace, a person जो पूरे फैमिली का नाम खराब करे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का रेप्यूटेशन खराब करे, किसी कंट्री का रेप्यूटेशन खराब करे. सो ignominious is a person who just brings shame to a company, a team, an organization, anything, a family, anything. Okay, is an ignominious person. Okay, so any doubts in this? So I just want you to take a minute to think of any other words that you can think of, and then I want you to comment here in the chat so that we can discuss more words here. Yes? So you also have influence. Okay, so fluence is fluency. जितने फ्लो में जितना स्पीड जितना फास्ट आप बात कर सकते हो वो फ्लुएंसी होता है, एक फ्लो होता है. सो इन्फ्लुएंसेस तुम्हारे फ्लो को रोक कर कोई चीज़ को समझाना या तुम्हारे फ्लो को रोकना या फ्लो को दूसरी डायरेक्शन देना, दैट इज व्हाट इज इन्फ्लुएंस. सो इन्फ्लुएंस बेसिकली मीन्स somebody who stops your flow and gives another direction to your flow. So influence अच्छा भी हो सकता है, influence खराब भी हो सकता है. So that is what is influence. Okay, let's continue to the next part then. So there are no doubts. Okay, let's continue. Okay. Next is ject, which means to throw or projectile, as in projectile. It basically means to throw. Ject means to throw. So projectile is anything which moves in a trajectory like this. Okay, like a U shape. A U shape is a trajectory or a projectile. So if I throw an object high into the sky, what happens if I throw a ball like this? What is going to happen? The ball is going to go from here and it's going to come down like this. So this is a projectile action or it's a trajectory. Object, against throwing. So object is anything which you shouldn't throw. Then conjecture is a guess, which means you're just throwing around your ideas. That is what is a conjecture. Conjecture is basically a guess. Dejection means sorrow, unhappiness. Okay, so the difference between reject and dejection is to say no to something, to reject it. Dejection is when you are rejected, the sorrow that you feel is dejection. So basically reject is to say no to somebody or something, and dejection is the feeling that you get when you have been said no by someone or something. Okay, inject is to throw inside, like an injection. Then eject is out. E is a prefix, E or X is a prefix which means out. So eject is to remove, out. Okay, so eject is to throw out. Okay, fine. Any doubts in this? Then the next word that we have, the next root word that we have is neg or ne. Okay. Okay, let's continue. Which means not or deny. Okay, as a negative. Negative means no. Negative means to deny something. So if someone has been tested negative for COVID-19, it basically means that they do not have COVID-19. Okay. Negation is rejection. Okay, negate is to reject a particular idea. So negation is rejection of a particular idea. Abnegate is decline. Abnegation is to reject or decline something.
So if you look at these words, neg, N-E-G, is not or to deny. So if you look at the meanings, negation is rejection, abnegate is to decline, neglect is to leave something, negligent is to be irresponsible, renegade is a person who rejects a group, और अ पर्सन हु इज़ डिसलॉयल, एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं, ऐसे लोगों को रेनिगेड बोलते हैं. ओके, सो इफ़ यू लुक एट दीज वर्ड्स राइट नाउ विच वी हैव डिस्कस्ड, सिर्फ और सिर्फ ये रूट वर्ड या प्रिफिक्स का मीनिंग जानकर हम इतने सारे वर्ड्स का जो है मीनिंग्स गेस कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं. जैसे यहाँ पे नेग और एन ई का भी हम लोगों को पता मीनिंग चल गया है, तो ये सारे वर्ड्स का जो वर्ड्स का मीनिंग है वो भी आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम टू सेम है. ओके, देन निहिल इज नथिंग और नील. सो एनाइलेशन बेसिकली मीन्स डिस्ट्रक्शन, कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है. That is what is annihilation. So annihilation is complete destruction of something. Nihilists are rebels. Okay, so जो radical लोग होते हैं, जो people who go against authority, go against government, go against society are basically nihilist or rebellious person. Okay. Now can you please tell me what is the can you tell me what is the word that you get from the word rebel? Rebel में एक root word है belly which means war. Okay, so और दो words क्या आप मुझे दे सकते हो जो previous classes में हमने discuss किया था, previous sessions में? तो एक word है belligerent और एक word है bellicose. So belligerent, bellicose ये दो words हैं which means quarrelsome, झगड़ालू, जो किसी और हर किसी से झगड़ा करता है वैसा व्यक्ति इज बेलिजरेंट और बेलिकोस पर्सन. सो यहाँ पे रेबेलियस का भी मतलब वही होता है. सो निहिलिस्ट इज अ पर्सन हु डज नॉट अग्री विथ एनीथिंग इन द कंट्री, सोसाइटी और इन दैट ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन. ओके, लेट्स मूव ऑन. Neo or nov basically means new. Okay, so neo or nov, both words basically the root words mean new. So neophyte or novice means new again. So neophyte, novice, amateur, ग्रीन हॉर्न. सो ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो नया नया है, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है उस फील्ड में, ऐसा व्यक्ति जो उस फील्ड में आया सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको वो फील्ड पसंद है, एज अ हॉबी, नॉट एज not as a professional activity but just as a hobby or just to have fun or just to that's basically what is neophyte or a novice person, or you can also say neophyte, novice, greenhorn. Okay, all these words are the same. Okay, next is neonatology, which means study of infants. Then neoclassicism, that is movement of art and literature. Then neogenesis, that is regeneration of tissue. Neolithic is anything which is outdated, anything which is no longer new is outdated or Neolithic. Neologism is a new word that has been invented or created. Novel means new. If you remember, we used to call COVID-19 until the name COVID-19 was given. It was called novel coronavirus, which means new coronavirus. Okay. Then innovate is to come up with anything new that is different from what you usually do. Okay. Renovate is to reorganize or redo what is there is renovate. Okay. So all these words have the same root word, which is neo or nov. Then knock, nick, neck, knocks. All these words mean harmful or injurious. So we have words like obnoxious, which means offensive or harmful. We have innocuous, which means innocent. Innocence is also somebody who is not at all harmful, बहुत harmless person है. So that is innocence. Nocent is injurious. Anything which is injurious is nocent.
noxious और noxious. Noxious का एक और मतलब हो सकता है poisonous. So noxious also means poisonous. Okay. Hello Gayatri. Okay, so do you have any doubts so far? Let's look at the next word, which is ob or against. So obdurate is stubbornly against something. Obstruct is to stop, go against something. Obfuscate is to deliberately darken something or to confuse somebody is obfuscate. Obnoxious is disgusting. Okay, so if you see here, we have discussed obnoxious means offensive or harmful, something that is against other person or thing. Obsequious is obedient or dutiful. Okay, to a point where the person is trying to cheat the other person. That's why it's a negative word. It's not a positive word. Obsequious is not a positive word. Obsequious का मतलब dutiful और obedient है, बट वो पॉजिटिव वर्ड नहीं है obsequious. वाई? बिकॉज obsequious का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ओबीडियंट और ड्यूटीफुल है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि वो कोई एडवांटेज ले सके उस पर्सन का, या कोई कोई किसी प्रकार से कोई एडवांटेज मिले उनको उस पर्टिकुलर पर्सन से, इसीलिए वो ओबीडियंट और ड्यूटीफुल है. ऐसे लोगों को हम obsequious बोलते हैं. Then we have obstinate. So we have words like obstinate, obdurate, okay. Then stubborn. All these are synonyms here. So stubborn, obstinate, and obdurate. All these are synonyms in this particular word. Obstreperous is something that is extremely disturbing, noisy. ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा noisy है, जो against peace of mind है, against calmness है, कोई भी चीज़ जो बहुत disturbing हो उसको obstreperous बोलते हैं. Next is obtrusive. So obtrusive is again something that is obstructing the way. So कोई भी चीज़ जो against खड़े हो जाती है, obtrude is to stop anything which from passing or going through. So an obstruction you can say. Then obviate is to remove. Obviate is to remove something, erase something. Okay, so if you look at obviate, it is similar to oblivion. Oblivion का भी मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो खाली पड़ा है. So oblivious यानी somebody who is unaware of their surroundings or ideas. Oblivion is a place which is completely empty. Okay, is oblivion. Okay, any doubts in this? Okay, let's continue. So we have the word path now. तो हमने ये path word जो है वो इसके पहले भी सेशंस में किया था, जब हमने sympathy, empathy ये सब डिस्कस किया था. So we have already done the word path before this. So let's quickly look at the word path. Path basically means to feel or emotion. So antipathy have feelings against something. Anti का मतलब होता है against. So pathy is feelings. So to have feelings against someone यानी क्या है? Hatred, intense dislike. So hatred और dislike का मतलब होता है antipathy. So antipathy is intense dislike or hatred. Apathy is without feelings. So somebody who has absolutely no feelings towards other human beings, unemotional person is an apathetic person. So you can say that most people are apathetic towards nature or environmental changes. यानी उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है environmental changes से. Sympathy is to have similar feelings as the other person. Okay, pathetic is pitiful. कोई भी person या situation जिसको देख के आपको sorry feel करता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्सन को हम पैथेटिक पर्सन या पैथेटिक सिचुएशन बोलते हैं. पैथोस बेसिकली मीन्स डिसीज और पैथोस कैन ऑल्सो मीन फीलिंग और इमोशन. सो एम्पथी इज अनदर वर्ड. सो एम्पथी और सिंपथी में बेसिक डिफरेंस ये है कि सिंपथी जो है which basically means that we have similar feelings. अगर for example I'll give you a small example.
लेट्स से आपके घर में एक पेट फिश है और आपके कज़न के घर पे भी एक पेट फिश है. अगर आपके कज़न का फिश मर जाता है तो आप समझ सकते हो एग्जैक्टली आपके फ्रेंड के घर में जो फिश है, कज़न के घर में जो फिश है, अगर वो मर जाता है तो यू कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड हाउ योर cousin is feeling. So that is what is empathy. Empathy is to understand what the other person is going through. Sympathy on the other hand, अगर आपके घर में फिश नहीं है, आपको फिश पसंद ही नहीं है एज पेट्स, और आपके कज़न का फिश मर जाता है तो आपको इसीलिए दुख लगता है क्योंकि आपके कज़न दुखी है, बट इसीलिए नहीं दुख लगता है कि वो फिश मर गया. सो बेसिकली सिंपैथी इज यू आर फीलिंग सॉरी फॉर द अदर पर्सन, यू ऑल्सो फील सैड फॉर द अदर पर्सन, बट you don't share the same feeling as the other person does. That is empathy. Then homeopathy, path can also mean diseases, as in pathology is study of diseases. Pathological lab is where they collect your blood samples to study diseases. And pathogen, gen basically means to generate, birth, as in a generation, genesis. Okay, so pathogen is a disease causing, it can be a bacteria, it can be a virus, it can be anything. Okay, any organism. Then you have allopathy, naturopathy, homeopathy. Okay, so allopathy. So all these words also have the same root word path, which means disease. Okay, any doubts in this? Then next we have the word fawn. So fawn basically means sound. So symphony is similar sounds. Symphony is basically in a melody, something that is rhythmic, something that has similar sounds, as in the ups and downs of your voice and rhythm is basically symphony, similar sounds. Cacophony is a noisy disturbance. Okay, cacophony is basically extremely noisy disturbance is a cacophony. Euphonious is melodious. EU is a root word which basically means good. So euphonious is something that is a वेरी गुड साउंड. ऐसा कौन सा गुड साउंड होता है? कोई भी चीज़ जो सुनने में बहुत अच्छा लगे उसको यूफोनियस साउंड बोलते हैं, मेलोडियस. Then we have the word telephone. Telephone helps you in talking to other people. Sound आप देख नहीं सकते हो but आप सुन सकते हो, so that is a telephone. Then you have symphony. Then next word is prob or prob, which means truth or to prove. So we have approbation, which means agreement. Disapproval, disagreement. Probe is to verify or test something. So किसी चीज़ को अच्छे से टेस्ट करके वेरीफाई करना उसको probe बोलते हैं. Then probability. Probable is something that is possible, a possibility. Then we have approve and improve. Improve is basically कोई भी चीज़ को better बनाना. Something that becomes better with time is an improvement. Okay? Fine. Any doubts so far? Okay, let's look at the next one. So pend is to basically to hand out something, to give something is pend, as an appendage. Appendage is to give something to somebody as a return gift, or just a general gift is basically appendage. So appendix is a list of things which talks about what is going to be given to you in that particular session, lesson or book, as in contents. कंटेंट्स जो लिखे रहते हैं कि इस पर्टिकुलर बुक में ये चीज़ें हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ एन अपेंडिक्स. देन डिपेंड, किसी के ऊपर डिपेंड करना. ओके. एक्सपेंडेबल, कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई सिग्निफिकेंस, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. इम्पेंडिंग, इट्स अबाउट टू टेक प्लेस, अभी होने वाला है. ओके. सस्पेंड, टू स्टॉप समथिंग. पेंडेंट इज अ स्मॉल लॉकेट काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू वेयर. पेंडिंग, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इट्स स्टिल आई हैव टाइम टू हैंड इट ओवर टू समबडी. ओके. पेंडुलस और पेंडुलम इज समथिंग दैट मूव्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. फिल इज टू लव और टू हैव समथिंग, एज इन फिलैंथ्रोपी. सो ये वर्ड भी हमने इसके पहले डिस्कस किया था. एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स. सो फिलैंथ्रोपी इज
loving human being. So basically a person who is very, you can say a person who likes to help other human beings, a person who likes to, give gifts to other human beings is a philanthropic person. Philosophy is again, a life idea, an idea which changes the life of another person is philosophy. Bibliophile is a person who loves books. A person who loves reading, a person who loves books is a bibliophile. Then peck, as in money, is pecuniary, is lacking money. Impecunious is also the same meaning, lacking money, or someone who is extremely poor is pecunious. Impecunious or pecuniary basically means lacking money. ऐसा लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं. ओके. पेड का मतलब होता है चाइल्ड, बॉय और इन्फेंट. सो पेडांटिक का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं. क्यों कंसर्न होते हैं? क्योंकि बच्चों में उतनी मैच्योरिटी नहीं रहती है कि खुद के डिसीजंस ले, खुद से कुछ काम करे, तो वो जो कंसर्न दिखाते हो उतना ज़्यादा किसी के प्रति, उसका मतलब होता है पेडांटिक. पेडांट इज अ लर्नड पर्सन. सो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी या औरत जो है उसको पेडांट बोलते हैं. A pedagogue is a teacher. Pedagogy is a method of teaching. Pedagogue is a teacher. A pediatrician is a child specialist. A person who specializes in child or children related diseases is a pediatrician. Okay. So I hope that these root words and prefixes have really helped you with understanding the words and their meanings, and you will be, if you have not attended the previous sessions, so please do go and have a look at them so that it will give you a better idea of what we are trying to do here. Okay, thank you very much.